Hello my dear students, this is my first video for the students of class 12th of business studies on the topic principles of management. Students, you all have studied lesson number 1 in your business studies, that was nature and significance of management. Now the next topic or the next chapter which you have to study in your syllabus of business studies of class 12th is principles of management. So students, this is the first part of the video in which we will study the meaning of principles of management, what are their characteristics, what is their significance, and Mr. Henry Fayol has given 14 principles of management. We will study those 14 principles of management. So students, moving ahead, this is the first topic, principles of management. First of all students, principles of management are broad and general guidelines for decision making and behavior of the managers. The principles serve as general practical guidelines to the managers for making decision, taking action and solving various problems systematically. They are not any rules, but they are a guide. They act as a guideline for the managers for a smooth running of the organization, and these principles also helps the manager of the business to take decisions and to take the decisions in the favor of the organization and to work systematically. Now moving ahead students, what are the features of principle of management? So the first feature is universal applicability. Students, the principles of management can be applied to all kinds of organizations, whether they are small or large, or the nature of the business, whether the business is a government organization or a social organization. However, the application varies depending on nature and size of the organization. So these principles can be applied on any type of business. The only difference is this, that their applicability changes from business to business and according to the nature and size of the business. Next, as we have discussed earlier, that these are general guidelines for helping the managers of a business. They help the managers of a business in taking quick decisions, and secondly, they have to be adjusted as per the demand of the situation. Next is, they are formed by practice and experimentation. Management principles are evolutionary in nature, means they have been developed through observation, experimentation and experience of the management thinkers. It means इनको जो है ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है, इनको प्रॉपरली ऑब्जर्व किया गया, उनको एक्सपीरियंस किया गया, डिफरेंट सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद ये प्रिंसिपल्स फॉर्म हुए. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट the world of the business is dynamic, it keeps on changing. So the management principles are also flexible. They are flexible and they can be modified by the manager as per the changes in the business environment. Next is mainly behavioral. Principles of management aims at influencing human behavior because the work is done by the human being. The business is conducted by human being. So this principle influence human behavior because human behavior is very complex in nature. So management principle aims to influence the behavior in order to achieve organizational goals. And the last is contingent. Contingent simply means that the application of principle of management is dependent upon the prevailing condition at a particular time, and they have to be suitably amended as per the situations. Contingent simply means they are not rigid कि एक बार जो follow कर लिया वही follow करना है. The principles can be amended, they can be modified or they can be changed according to the business environment या according to the surroundings of the business.
So these were the some of the main features of principles of management. Moving ahead, student, what is the importance and significance of principles of management? So student, the first is scientific decision. Scientific decision means that they are based on observation, experimentation, applicability, and they are realistic. Secondly, decision based on principle of management are free from bias. Next is fulfilling the social responsibility. There are certain responsibility of the business towards the society also. So the management theory or the management principle has also evolved in response to these demands. Principle help in fulfilling the social responsibility by responding to the demands of the public. Next is optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources means these management principles also teaches us we do not have to waste any resource. We have to use the resources in a very optimum way so that they are not wasted. Next is meeting changing environment requirements. As we have discussed earlier, that the principles of management are dynamic in nature. They can be changed, they can be amended, they can be modified according to the changing environment. And the next is management training, education and research. Basically student, these principles help to increase the knowledge as they are used as a basis of management training, education and research. So student, this was the meaning of principle of management, the features and the importance of principles of management. Now moving ahead, the next topic is Fayol's principles of management. Mr. Henry Fayol is known as the father of journal management for his contribution, and he has given total 14 principles of management. Mr. Henry Fayol को father of journal management कहा जाता है और उन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के. अब आगे इस वीडियो में हम वो सारे के सारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे. आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी प्रिंसिपल with their importance and their application. Student, first is division of work. Student, according to this principle, the work of an organization should be divided into small task. पहली चीज़, जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है वो छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया जाना चाहिए और हर टास्क किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो उस पर्टिकुलर फील्ड का स्पेशलिस्ट है, उसको उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज है एंड ही इज़ वेरी एफिशिएंट इन दैट फील्ड. लाइक टास्क रिलेटेड टू प्रोडक्शन शुड बी गिवन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, टास्क रिलेटिंग टू द फाइनेंस शुड बी गिवन टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट, टास्क रिलेटिंग टू द सेल्स शुड बी गिवन टू द मार्केटिंग एंड द सेल्स डिपार्टमेंट, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं. Secondly, students, it leads to specialization as work is divided as per qualifications. ठीक है. And the most important thing, it increases the efficiency of the work. जब हम काम को या वर्क को स्पेशलाइजेशन और क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिवाइड कर देंगे और उन्हीं लोगों को असाइन करेंगे जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो वी विल अचीव एफिशिएंसी. This is the basic meaning of division of work. The next is authority and responsibility. Student, first of all, there should be a proper balance between authority and responsibility. Authority simply means right to give orders to the subordinates. एक superior अगर एक subordinate को order देता है तो it means he has that authority to give order to the subordinate. And responsibility means it is the duty of the subordinate. It is the responsibility of the subordinate to complete the assigned task to him on time. Authority का मतलब एक superior दूसरे subordinate को decision देता है या कोई work देता है या कोई order देता है और उस ऑर्डर को टाइम रहते ही कंप्लीट कर देना अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबऑर्डिनेट की. स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ दीज थिंग्स
they should be in the proper balance in the organization, because if there will be a improper balance between authority and responsibility, it will create a lot of conflicts and confusion in the organization. So secondly, if a lot of power has been given to any one superior, that particular superior can also misuse his power. Secondly, if अगर किसी सबॉर्डिनेट के ऊपर कोई सुपीरियर ही नहीं है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी किसको देगा? उसने अगर वर्क कंप्लीट कर लिया तो वो अपने वर्क की रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट किसको दिखाएगा अगर उसके ऊपर कोई सुपीरियर ही नहीं है? तो सुपीरियर रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सुपीरियर नहीं होगा तो सबॉर्डिनेट्स विल बिकम लेजी, दे विल नॉट डू देयर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। एंड सुपीरियर के पास भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पावर या अथॉरिटी ही होनी चाहिए ताकि वो उसका मिसयूज़ ना कर सके। So this was the basic meaning of authority and responsibility, my dear students. Now the next principle of management given by Mr. Henry Fayol is discipline. Student, discipline simply means obeying of rules and regulations of the organization, and we have to obey rules and regulations of the organization just for the systematic working of the organization. Discipline requires very good supervisor at all levels and clear and fair agreement regarding rules and regulations. There should be discipline at each and every level. Secondly, there should be a fair agreement. Thirdly, if anyone disobeys any rule and regulation, no matter he belong to any level, he should be given punishment or imposed fine. And discipline is basically conducted for the smooth and systematic functioning of the business. And secondly, it creates better relation between management and employees. Moving ahead, student, next is unity of command. Unity of command का simple सा मतलब है that one subordinate should receive order and should be accountable to only one superior. एक सबॉर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए. अगर उसको एक से ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिलेगा तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, it will create a lot of disturbance, it will create a lot of conflicts and overlapping of activities. उसको समझ ही नहीं आएगा कि किस सुपीरियर का काम पहले करके दें. he will get confused and he will overlap the things. नीचे देखिए मैंने एक डायग्राम के थ्रू लिखा हुआ है सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. वन सुपीरियर टू वन सबॉर्डिनेट इज यूनिटी ऑफ कमांड, एंड सुपीरियर वन सुपीरियर टू सुपीरियर थ्री, ऑल दीज थ्री सुपीरियर्स आर गिविंग ऑर्डर्स टू ओनली वन सबॉर्डिनेट. दिस इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड. This is not done at all. There will, if unity of command will be followed, there will be no confusion in the minds of the subordinate and better performance of subordinates can be received. Now students, the next thing is unity of direction. Unity of direction, students, simply means that there should be one head and one plan for all group of activities having same objectives. पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी लोग हैं सब के मन में, सब के माइंड्स में सिर्फ उसी प्लान की तरफ किस तरह से चलना है, उस प्लान को या उस ऑब्जेक्टिव को किस तरह से अचीव करना है, सिर्फ उसी पर फोकस होना चाहिए. ऑल द माइंड्स एंड ऑल द एक्टिविटीज शुड मूव इन वन डायरेक्शन ओनली. एज आई हैव इलस्ट्रेटेड विद अ डायग्राम. सी जो पहला डायग्राम है, ऑल द एरोज आर इन वन डिसीजन मीन्स ईच एंड एवरी सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट आर मूविंग टूवर्ड्स अ सिंगल डायरेक्शन, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड. और अगले डायग्राम में देखिए, सम आर मूविंग इन अनदर डायरेक्शन, सम आर मूविंग इन अनदर डायरेक्शन. So this is lack of unity of direction. So this is the basic meaning of unity of direction. Unity of direction, it emphasizes importance of common goals and helps in achieving them, and it also assures unity of action. क्योंकि सब लोग एक ही जैसा एक ही टारगेट के लिए काम करेंगे तो it will ensure unity of action and it will also develop a feeling of coordination between all the employees of the organization. Now students, moving ahead, we have the next
principle, that is remuneration of employees. Remuneration of employees simply means that the overall pay or the overall salary or the overall remuneration, whatever you are giving to your employees, should be fair according to their work, according to their qualification. If you want that your employees should work with commitment, वो commitment के साथ काम करे, फुल्ली मोटिवेशन के साथ काम करे, तो आपको उसके वर्क के अकॉर्डिंग, उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और उसने अपनी जितनी सर्विसेज रेंडर की हैं बिजनेस में उसके अकॉर्डिंग उसको फेयर वेजेस या फेयर रेमुनरेशन पे किया जाना चाहिए. अगर ये नहीं पे होगा, सो द एम्प्लॉय विल फील डीमोटिवेटेड, ही विल नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Payment of good remuneration maintain relationship between employees and management. So this is the basic meaning of remuneration of employees. The next is subordination of individual interest to general interest. Subordination of individual interest to general interest का बच्चा सिंपल सा एक मतलब है that the interest of the organization is priority, nothing else. ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है, वही सबका इंटरेस्ट होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से ऊपर किसी भी एम्प्लॉय का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट प्रिवेल over the interest of the individual or employees. It helps in achieving goals of the organization and it also brings coordination between individuals and organizational objectives. अगर हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर रखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन will never be able to achieve its objectives. So the objectives or the targets of the organization should always be given priority. Students, the next thing is centralization and decentralization. जैसे हमने पहले पढ़ा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ठीक उसी तरीके से देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ किसी एक के हाथ में दे देना, दिस इज सेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल द लेवल्स. थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग पावर हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना, दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन. बोथ शुड बी इन बैलेंस्ड एज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी completely centralized और completely decentralized. अगर सेंट्रलाइजेशन ही होगा, अगर डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ एक ही हाथ में होगी, इट विल लाई इन ओनली वन हैंड, तो डिसीजंस लेने में डिले होगा, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर विल बी कन्फ्यूजन्स, उसके बाद द पावर कैन बी मिसयूज्ड ऑल्सो. डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन से सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, जिसके जिसके पास ये पावर्स होंगी, टू बी अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क्स एंड एक्टिविटीज़. जैसे मैंने हर डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट हेड्स को पावर दे दी जाए कि उस डिपार्टमेंट को प्रॉपरली रन करने की जिम्मेदारी उनकी, एंड उनके ऊपर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बैठे हुए हैं, द ओनर्स और द मैनेजर्स और द डिप्यूटी मैनेजर्स, वो आपके जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं वो उनको जाके रिपोर्ट करें अबाउट देयर डिपार्टमेंट. सो दिस इज़ डिसेंट्रलाइजेशन. नेक्स्ट principle in this context, students, is order. Order simply means there should be a place of everything and everyone in the organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति की और हर मटेरियल की एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए और वो व्यक्ति या वो मटेरियल उसी प्लेस पर हमेशा होना चाहिए. There should be a proper order. People and material must be in a suitable places at appropriate time for maximum एफिशिएंसी. अगर सारी चीज़ें, अगर हमें पता है कि रॉ मटेरियल्स स्टोर्स में रखे हैं और हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत स्टोर में जाएंगे और रॉ मटेरियल लेके चले आएंगे. इट विल सेव आवर टाइम. और अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल 4 अलग अलग जगहों पर रखा है, तो इट विल इनकर अ ह्यूज टाइम पीरियड टू फाइंड द रॉ मटेरियल यू नीड. 4 अलग अलग जगहों पे रखा है तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा. क्लियर? उसी तरीके से
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहें, सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट में रहें. दैट द दिस सिंपली मीन्स द एम्प्लॉई शुड रिमेन इन देयर डिपार्टमेंट्स ओनली. They have a fixed place over there. So simply this particular principle means that it means that the things or the person or the employees of the business should be at their fixed places, and this is done just to avoid wastage of time. It is done to improve our efficiency, and it is also done for the smooth and systematic working of an organization. Students, moving ahead, next is the scalar chain. Scalar chain, students, simply means that organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and followed by managers and all the subordinates. कम्युनिकेशन जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड चेन या एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ के थ्रू ही ट्रैवल करना चाहिए. दिस पर्टिकुलर path of traveling communication is known as scalar chain. Like as illustrated by the diagram, if Mr. A या Mr. F हम ले लेते हैं, if Mr. F wants to convey some information to Mr. A, so first of all he will convey to Mr. D, D will convey to B, and the B will convey to A. This is the proper flow of communication from one superior to subordinate या one subordinate to superior. But in some cases, in some emergency situations also, students, two subordinates can contact directly also. जैसे मान लीजिए F को Mr. G से कुछ काम है, तो वो स्केलर चेन को फॉलो ना करके इमरजेंसी सिचुएशंस में F डायरेक्ट जाके G से भी कांटेक्ट कर सकता है. एंड दिस डायरेक्ट कांटेक्ट is known as scalar. This direct contact is known as it is known as gangplank. So students, this principle simply means order and smooth flow of information in the organization, clear lines of authority and responsibility relationships. It develops a better relationship between subordinate and superior due to absolute respect of the authority. Clear everyone? The next is equity. Equity, students, simply means that the working organization of any business should be free from discrimination amongst the employee on the basis of religion, language, caste, color, नेशनैलिटी एटसेट्रा. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में किसी भी बेसिस पे. ईच एंड एवरी एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड इक्वली. इफ़ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय हैज़ डन अ गुड वर्क, ही शुड बी अप्रिशिएटेड. इफ़ ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग विच इज़ नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ही शुड बी पेनलाइज्ड एंड ही शुड बी पनिश्ड. क्लियर? It improves satisfaction and motivation level amongst the employees, and it also improves the relationship between employees and the management. Next thing is stability of personnel. Stability of personnel simply means, students, that जो आपके organization के employees हैं, they should be stable. स्टेबल का मतलब होता है कि उनको बार बार आपने एक बार जॉब दिया, फिर आपने उनको जॉब से निकाल दिया, फिर आपने नया कोई एम्प्लॉय रखा, आपको वो भी पसंद नहीं आया, आपने उसको भी निकाल दिया. तो बार बार ये फ्रीक्वेंट टर्नओवर्स नहीं होने चाहिए एम्प्लॉयज़ में. किसी भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने से पहले आप एक ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, और उस प्रोसीजर को क्रॉस करते हुए जो भी एम्प्लॉय आप या जो भी पर्सन उस प्रोसीजर को क्रॉस कर जाएगा उसको अपॉइंट करिए एंड गिव हिम सम टाइम टू प्रूव हिमसेल्फ इन द ऑर्गेनाइजेशन. आप किसी पर्सन को या किसी एम्प्लॉय को एक दिन में या एक वीक में जज नहीं कर सकते हैं. गिव हिम सम टाइम टू प्रूव हिज efficiency, to prove his education, to prove his knowledge, and to prove his worth. After giving time, if he is not capable of proving himself or herself, then change him, make a new appointment. But frequent turnovers in the employees should not be made. Employees, one should be selected and appointed after due and rigorous process. They should be given a minimum period to show some reasonable results. Clear, students?
If you will keep on changing employees very frequently, the other employees will feel insecure for their jobs. It also decreases the reputation and the goodwill of the company. And as appointing employees again and again, it incurs huge cost. It also incurs huge resources. Then you have to pay a lot of expenses on recruitment, selection, training and all. So this is the main meaning of this principle. The next principle is, students, initiative. Initiative simply means, students, workers should be encouraged and given an opportunity to take some initiative in making and executing plans. जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई नया प्लान या पॉलिसीज़ बनाता है, हमको उसमें अपने एम्प्लॉयज़ के भी सजेशंस लेने चाहिए. इफ़ यू विल टेक सजेशंस फ्रॉम योर एम्प्लॉयज़ ना, he will feel motivated, he will think for it, he will enhance his or her knowledge for that, for giving that particular suggestion. It also increases the mental growth. It also increases the feeling of commitment and motivation of employees towards the organization. And students, the last and the 14th principle given by Mr. Fayol is spirit de corps. And spirit de corps means that management should promote a team spirit, a unity and harmony amongst the employee. कि वो organization is that particular organization is like a family, and all the organization members, the employees are the family members. They have to work together in a team, and they will work together in a team with harmony, without any confusion and conflict, in a very better and coordinated manner, and they will achieve the organizational goals. So students, this was all about for this video, and you have learned the meaning of principles of management, its features and significance. And apart from these, we have also studied 14 principles of management given by Mr. Henry Fayol, who was called as the father of journal management. So students, I hope you will enjoy watching this video and you will learn a lot of things from this video. Keep on watching this video. If you have any doubt, you can ask me, students. So, and now this was the part 1 of this chapter. In the next video, that is principles of management part 2, we will cover the next topic relating to this. जैसे कि मिस्टर हेनरी फेयोल ने 15 प्रिंसिपल्स दिए थे, उसी तरीके से एक मिस्टर F.W. टेलर थे जिन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए, और उनके प्रिंसिपल्स को कहा गया साइंटिफिक प्रिंसिपल. दीज प्रिंसिपल्स वर प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, एंड मिस्टर F.W. टेलर हैज़ गिवन the principles of scientific management. So in the next video we will discuss about that and another things. Till then, keep on watching this video, keep on studying. Thank you everyone, and best of luck.